टीपी की पॉडकास्ट की वजह से एक दफा मेरी बहुत क्लोज और बहुत स्वीट और बड़ी अच्छी फ्रेंड है, उनसे मेरी लड़ाई हो गई थी. उसकी वजह ये है कि I was expected to see her off at Hamburg train station. She was leaving. उसका मास्टर्स खत्म हो गया था. और उसने मुझे कहा कि तुम मतलब आओगी, मतलब उसने मतलब मेरी और उसकी दोस्ती इस तरह की कि शी सेड कि तुम आओ, मेरी हेल्प करो, आई नीड योर हेल्प. देन फिर मुझे समझ आती है. उसने कहा तुम आओगी, मैंने कहा कि नहीं, मैं तो पॉडकास्ट कर रही हूँगी, तो वो तो 6-6 घंटे चलती है, वो तो सायरा, तो मैं तो सुबह बहुत थक जाऊंगी, मैं नहीं आ सकती. Then she was pissed for the right reasons. Actually, she was pissed off at me. I was like, मैं तो बहुत थकी हूँ, मैं सुबह उठ के नहीं आ सकती 8 बजे ना. तो ये होता है sacrifice. She said के तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं एक्सपेक्ट करी थी कि तुम यहाँ पे आओगी और तुम किस तरह की हरकतें करती हो. फिर मुझे रियलाइज हुआ और फिर जो है मैंने उसको कुछ चॉकलेटें और एल्बम में 1-2 तस्वीरें बना के, खूबसूरत सी एल्बम बना के मैंने उसको भेजी. उसमें नीचे लिखा बेस्ट फ्रेंड ब्ला 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 ऐसा करके ना, मतलब उसको फिर मुझे कुछ करना पड़ा उसके साथ, उसको खुश करने के लिए. तो मेरे पास ये बैक ड्रामा है. उसके अलावा मेरे पास और बहुत सारे हैं जिसका शहजाद ने शुरू में मुझे इशारा कर दिया था कि नहीं मरियम, उसका क्या था कि मैं कोई मतलब पता नहीं ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी तो उसके बाद जो है ना किसी की जो है ना मतलब सारों की ना बेइज्जती हो जाएगी. Take your own call. And if you feel that some story needs to be told, since Sajeer ने mention कर दिया है कि कुछ बच्चोदियां are not online, इसमें भी ज्यादा मिर्चें गॉसिप ना रखें. It's as simple as कुछ लोग हैं, और especially let me just complete Mariam. Especially एक political party है जिसके social media को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, तो वो out of context 5-5, 10-10 सेकंड निकाल कर जो कैंपेने चलाते हैं, सो उनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, राइट. आई एम इन माय हेड व्हाट आई थिंक इज राइट एंड आई एम डूइंग इट एंड आई एम नॉट स्केयर्ड, बट इट्स जस्ट दैट वो एक परसेप्शन बन जाता है ना, राइट. वेल इंटेंशन पीपल विल सी 10 सेकंड. अब बचौदियां जो सुनते हैं उनको पता है हम बचौदियां किस तरह कर रहे होते थे, उसकी क्या फील थी, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी. 10-15 सेकंड बच्चोदियां के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आप निकालेंगे और ट्विटर पे डाल देंगे, एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट दे सी ऑफ शहजाद गियास. ऑब्वियसली दे माइट हैव एन ओपिनियन व्हिच डज नॉट एनकैप्सुलेट हु आई एम, एंड इट जस्ट बिकेम टू मच फॉर माय मेंटल हेल्थ एंड फॉर अदर पीपल्स मेंटल हेल्थ एज वेल हु वर इन्वॉल्व्ड. सो वी हैड टू मेक सम बच्चोदियां एपिसोड्स प्राइवेट. आई एम सॉरी बट इट मेंटल हेल्थ छोड़ भी दें अगर हम, तो हमारी जिंदगी पे आ गई थी यार. जिस तरह के थ्रेट्स आने शुरू हो गए थे, तो if you want me alive then some बच्चोदियां episodes need to be private. I'm really sorry. Yeah, and I just want to add here कि like अगर कोई जैसे चीज प्राइवेट, जैसे for instance बच्चोदियां, right, it was great, it was lovely, it was very rare, but like अगर ऐसी कोई चीजें प्राइवेट करनी पड़ती हैं, या if you're not seeing people, like let's not just wildly speculate. Like none of, like I know nobody ever reaches out to me, which is great because I love being so under the radar, but like रिलैक्स करो यार, सब इंसान है, सब काम कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सब अपना अपना कर रहे हैं. लाइक यू गाइस डोंट नीड टू स्पेकुलेट लाइक हर चीज में. एंड इतना भी कोई मतलब इतनी भी पोलराइजिंग नहीं होनी चाहिए कि नहीं एक बंदा सही और एक बंदा गलत है. लाइक रिलैक्स योरसेल्फ, पीपल आर एग्जिस्ट इन लाइक अ मल्टीट्यूड ऑफ वेज. it's not that deep. It's really not that deep. And if I may say this, if any person is saying that they're anybody you follow, whether that's Imran Khan, whether that's somebody on social media who says that they're only the right person and they just use their platform to shit on other people and say everybody should be cancelled and I'm the only person you should follow and everybody is the worst, they're not the right person. Even if they seem like the best person in the world, this is not energy you want around in the long run. And if there's one good thing that we've done in TP is we've tried to shine light on great people. And anytime a guest comes, मेरी हमेशा कोशिश होती है to make all of you think that this person's amazing, even if I disagree with them, right? So if people just use their platform to spread negativity, yes, in the short run वो एक किक मिलता है यार, इसने तो ले ली उसकी, मजा आ गया. और फिर आप दूसरे बंदे को जाके गालियां भी दें. अगर एक इंसान बोलता है कि यार इस इंसान को जाके गालियां दो, ये इंसान बुरा है, आप सब इकट्ठा हो जाते हैं, बड़ा मजा आता है, हाँ यार हम सब एक ग्रुप बन गए, मॉब बन गए. In the long run, that negative energy you don't want around yourself, and that's the decision a lot of us have taken, that we don't want that negative energy around us, and I hope people who are listening can respect that. I also think that एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, sorry I'm speaking so much, but like if you are at a platform like TP, or if you even follow like so many of the wonderful people who have come and talked on TP, you
also like the onus थोड़ा आपके ऊपर भी है that you should know better than to understand, like you need to understand कि follow the conversation and not the person. People make mistakes, people are not like people are human at the end of the day. I feel like जो conversation हो रही है, जो learning है, उस पर focus करना चाहिए as opposed to putting people on pedestals where they probably not, it's not like they don't belong there, it's like what's the point, आपको क्या मिल रहा है किसी को pedestal पे रख के? आप conversation से सीखें, आप उस बात पे focus करें, आप hero worshipping छोड़ दें. Trust me, don't ever meet your heroes. It will break your heart. That this has happened to me way too many times. And And me. sometimes you're, yeah, and sometimes your heroes, sometimes your heroes will leave you on red on WhatsApp, and then you message them again, and they read you or leave you on red again. And if Myra Khan is listening to this podcast, like just know that you've left me on red way too many times, man. It's not cool anymore. You have her number. More importantly, you have her भाई number. आप वीडियो देखे माहिरा और सजीर के हक की, ऐसा लगता है कि एकता है, माहिरा नहीं है. जितने प्यार से एकता को हक नहीं दिया आज तक, उस तरह माहिरा पे इसने किया था. मरियम, मैंने आपको कार्ड दिया था when you were speaking. I'm really मैं sorry. यही So कह रही please, थी मरियम. Sorry. मैं यही ऐड करने लगी थी कि ड्यूरिंग उस वो पॉडकास्ट जो है वो एंटरटेनिंग होने के अलावा पर्सनल भी एक नोयत भी है, क्योंकि उसमें एटलीस्ट आई को शोड अ लॉट ऑफ वल्नरेबिलिटी, और वो अच्छी बात थी. मतलब आई एम स्टिल आई थिंक प्राउड ऑफ दैट, no shame in that, but some people used those specific pointers to come back at me several times. तो फिर उसमें से एक दफा मैंने शहजाद से रिक्वेस्ट की कि ये मेरी जो है ना इस वक्त मेंटल हालत में जो है ना वो इमोशनल इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मुझे ये बर्दाश्त कर सकूं, तो ये थोड़ी देर के लिए जो है ना हटा दो. तो उसमें ये वजह भी थी जी. हाँ, और जो मतलब जो लोग वोक बनते हैं वो यूजुअली होते नहीं है. उनको डीएम्स में अगर आप देख लें, जो वो हीरोज की बात सजीर कर रही है, समटाइम्स या पीपल हाँ, ऑफ तो मुझे कैमरा ये था कि go against everything that they preach. But I'm not. But this is not a comment on Myra Khan. She's great off camera also. Which, please send this. Somebody please take this clip out of context. Make a 10-second thing of me just begging Myra Khan to reply to me on WhatsApp. Please. I'm trying to get her on this podcast. I'm trying to get her on just general other things as well. Like, please make that happen. When this gets Mariam, posted, tag her in. Sorry. Mariam, if I may just ask you, I know you're like, and the conversation is about when you're vulnerable online, how people weaponize that against you. I started talking about mental health maybe like 7 years ago when it wasn't such a buzzword. And to this day, when people are tagging me on Twitter, they're like, "Arey, tu suicide kar lega, haha, it's the mental health nahi hai, pagal nahi." And the people around you have weaponized that as well. So there is a huge cost you pay to be vulnerable online. So I do want you to talk about that, how that. Do you want me to tell the story? As much as hundreds of people give you love for being vulnerable online, at times it also comes and bites you in the ass when people that you shared with, hoping that they're safe people, turn out to be assholes and weaponize it against you. तो मैं रोने ना लग दूं बीच में, लेकिन वो जो मैंने उस पॉडकास्ट में शेयर की थी, मैं लोगों को पहले तो शुरू में ये बता दूं कि दिस वाज नॉट प्लान्ड, दिस इज व्हाट आई एम नेचुरली. तो उसमें मैं खुद भी अपना कई दफा मजाक उड़ाती हूँ कि आई ओवर शेयर एज वेल समटाइम्स. और अगर मेरी को बात सुनना शुरू हो जाए और मैं बोलना शुरू हो जाऊँ ना, तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, ट्रस्ट मी ऑन दैट, फॉर 5 hours. So those podcasts were like 4-5 hours long. So I naturally obviously spoke about my vulnerability, and it is actually not the first time that I'm meeting a set of people for the first time, और वो कुछ इस तरह के connection और वो कुछ इस तरह की click हो जाती है energy के, मतलब फिर आप जो है ना बड़ी ease से आप बोलना शुरू कर देते हैं. तो that's what I did. तो शुरू में तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, मतलब इवन अभी भी, एंड आई चेरिश देम अ लॉट. मतलब सबसे एक मुझे इंटरेस्टिंग कमेंट ये लगा, मेरी फ्रेंड इसमें है वो बच्चा, उसने कहा कि मेरी बहन की डिवोर्स हो रही थी और उन दिनों आई हैड ओनली योर पॉडकास्ट टू शो टू हर. मुझे नहीं समझ आती थी कि मैं उसको क्या बोलूं, लेकिन आई हैड ओनली यू व्हाट यू वर सेइंग ऑन दोस पॉडकास्ट टू शो. So I was like, this is the kind of compliment that I remember. But then I mean, हर चीज जो है वो परफेक्ट नहीं होती, और हर दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती. तो
इवेंचुअली ये भी हुआ कि उस पॉडकास्ट के अंदर लोगों ने मेरी जो है वो डिवोर्स को लेके और बार बार जो मैं अपनी मेंटल वल्नरेबिलिटी की और इमोशनल ट्रॉमा की बात करती थी ना, कि मेरे तो यार मेंटल मतलब हेल्थ चुदी हुई है, मतलब मेरा तो दिमाग आजकल काम नहीं करता, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। इस तरह की जो मैंने हरकतें और बातें की मैं ना, जो कि सच थी। आई वॉज इन अ वेरी वल्नरेबल पोजिशन। मेरी डिवोर्स को अभी मेरा ख्याल है कुछ 7-8 महीने भी नहीं गुजरे थे। खैर, तो वो उन्होंने उठा के पॉइंट लेके कि देयर वाज अ सर्टेन पर्सन हु सेड कि यू नो आई तो हैव नेवर टेकन यू सीरियसली, बिकॉज तुम तो जब भी पॉडकास्ट में आती थी तुम तो हर वक्त अपने डिप्रेशन की और वनरेबिलिटीज की और रंडी रोना करती रहती थी हर वक्त, तो तुम्हारे तो मतलब दिमागी हालत को मैंने कभी सीरियसली लिया नहीं। फिर उन्हीं दिनों कुछ इस तरह का वो हुआ, क्या उसे कहते हैं, कि कोइंसिडेंस हुआ कि किसी एक और खातून ने, जिसको मेरी सरकास्टिक नेक परवीन की वीडियो की लिजिट उसको मेरी सरकास्टिक नेक परवीन वीडियो की समझ नहीं लगी, हालांकि वो नॉर्मली देखती थी और कभी कभी तारीफें भी करती थी, तो मुझे मैसेज करके कहती है, आपने तो इतनी इंटीमेट और जो बातें नहीं भी बतानी चाहिए थी वो भी बताई हुई थी बातें आपने पॉडकास्ट में, तो आप इस तरह की बात क्यों कर सकती हैं डिवोर्स खातून के ऊपर। तो मैंने कहा, बहन मेरी है, सरकाज़म था बहन। तो खैर मतलब मेरी जो है ना फिर बस हो गई। आई वाज लाइक, मैं थोड़ी सी अपने आप से शर्मिंदा भी एक तरह से हुई, और फिर मैं तरह अभी भी कन्फ्लिक्टेड हूँ इस चीज में कि पता नहीं मुझे नहीं था शायद बताना चाहिए, और शायद इतनी डिटेल में नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि मैंने देखा है कि पीपल हु वर सपोजिटली क्लोज टू मी and you know then they are suddenly not, and then they think that it's okay to mock me for the exact things that I have said in that podcast that may go against my own sanity। कि जब मैंने अपने आप को बोला कि मेरा दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है, मैं इतनी डिप्रेस हूँ, मेरे जो है ना मैंने बेसिकली अपनी वीकनेसेस शो की ना ज्यादा जितनी कर सकती थी। तो I thought कि someone will take comfort in that, and a lot of people did, but some people took strength out of that, whatever you could call it, out of it as that, and that like disturbed me so much। टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ मैं एक्चुअली आज ही शहजाद को ये कहने का सोच रही थी कि इसने 2-3 पॉडकास्ट मेरे कहने पे अनपब्लिश की, तो वैसे कहती कि पब्लिश कर दो। मैं अभी देखती हूँ ना क्या करते हैं बहन चोद के बच्चे। तो मैंने कहा कि मतलब अब मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस वक्त मैं इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी कि मैं ये बर्दाश्त कर सकती कि मतलब कोई मेरी पॉडकास्ट से इतना सा क्लिप निकाल के जो है ना मुझे पागल प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। एनीवे आई वेंट ऑन सच अ रैंट। चुप कराओ मुझे। नहीं आई थिंक थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी अगर इमोशनल हो गए और आप मुझे नहीं पूछना चाहिए था, बट आई डू वांटेड दिस आउट बिकॉज इमोशनली तो मुझे होना आता है, इमोशनल ही होने की वजह ही से तो मेरा नाम मशहूर है। नहीं, बट आई डिड वांट दिस आउट बिकॉज इट्स आल्सो दैट यार देखो, मरियम हो गई, सजीर हो गई, एकता हो गई, मैं हो गया, हम लोग सोशल मीडिया पर हैं, बट एज सच हम इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं, हम माइलो नहीं बेचना चाहते, हम टीवी पे से इंटरव्यू जा जाके नहीं देते, हम उस क्लाउड की डेस्परेशन या चेस में नहीं है। आप लोग हमसे नहीं सुनेंगे। सजीर तो है ये क्लाउड भी चेसर बात नंबर बतानी 1 बहुत सबसे जरूरी बड़ी। है कि वो जो टीपी जो हुई थी, वो all that at least from my side those emotions and that friendship was real, like I am not a chutiya sitting there doing drama and doing small talk, I cannot do that, this is the last thing that I would do on earth। मुझे तो ऑफिस में जो है ना लंच टाइम पे एंजाइटी होना शुरू हो जाती है कि यार अब इसके साथ मुझे मौसम की गुफ्तगू करनी पड़ेगी। I cannot do that। So what I was getting at was people who are in that cloud chase might think of us as obstacles they need to get over or audiences that they need to steal। तो अगर आप कल को कोई पढ़ें भी या सुने भी कि कोई कुछ कहा जा रहा है या किसी के खिलाफ कुछ कैंपेन चलाई जा रही है या सर्टेन इश्यूज मिसयूज हुए जा रहे हैं मरियम को बुरा भला बोलने के लिए, look at who that person is, judge your eyes, judge your ears, look at everything that you've heard, this holistic person। अगर कोई आकर आपको अपने जख्म दिखाता है और उन्हीं जख्म को वेपनाइज करके कोई और उस इंसान को कैंसिल कराने की कोशिश कर रहा है, प्लीज अपनी भी एक इंस्टिंक्ट और अपने भी एक कॉन्शियंस को ट्रस्ट करें कि आप जो सुन रहे हैं अगर वो आपको सच लग रहा है और आपके दिल को छू रहा है तो उस इंसान में तो कुछ इसकी अच्छाई बात होगी जो आपको नजर आ रही है। और दूसरा इंसान अगर सिर्फ टेक्स्ट में किसी को बुरा भला कह रहा है एंड वांट्स टू रिड्यूस दिस ब्यूटीफुल होलिस्टिक पर्सन विद vulnerabilities with experiences to a hateful word,
please don't believe them. इसलिए मेरी शहजाद से दोस्ती है अभी तक. ये भी सारे सुन ले. I was just gonna say, I was thinking about it कि जो आपका जो एक इनर सर्कल यानी कि यूजुअली जो आपके गेस्ट्स होते हैं, आपकी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जो होते हैं, जो बातें आप करते हैं ना, वो यूजुअली मैं अपने ऑलमोस्ट बचपन टीनेज ईयर्स में स्कूल की जो ग्रुप ऑफ गर्ल्स जो होती थी, when you're in school and stuff, वहाँ भी cliques होती थी, right? And you would select a few after a lot of trial and error actually, humans इसी तरह bond करते हैं ना कि मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, let's see how you react to it, and then I will see if I can trust you to tell you more, and then you tell me something, and then back and forth, right? अगर आप सारे एक कमरे में बैठे होते, having a private conversation with yourselves, you wouldn't have to face that, Mariam, के randomly लोग बाहर से, यानी कि the audience basically आपको इस तरीके से react कर रही है. I think social media and exposing ourselves to the scale that we do emotionally to the outside world and stuff, we are not necessarily ready for that, especially हम कोई बड़े स्टार like आप लोग, I'm just a guest here, आप लोग कोई बहुत बड़े trained stars तो हैं नहीं जो regularly you're facing exactly the same thing if not more कि जो maybe 90s में एक शाहरुख खान was exposed to, right? Shahrukh Khan even in the 90s maybe didn't have to listen to every single stupid thing somebody had to say about him, but social media की वजह से it's completely unfiltered, जो भी बकवास वो उनके जहन में थॉट पकती नहीं है पूरी कि वो टाइप हो जाती है, so I think it's actually, and I was reading somewhere the other day that आपके ब्रेन में जब आपको कोई जो भी बात बोलता है, कोई गलत बात बोलता है जिससे आपको दर्द होता है, the brain, the part of the brain that gets hurt by that is the same part of the brain that gets hurt if somebody actually physically hurts you, or like how do you then deal with that, right? आपको जब यानी कि कोई भी दर्द लगता है, मैं तो इस साइड से जा रही होती हूँ और जब टेबल पे मेरा पाँव लगता है, oh my god, तकरीबन घंटा लगता है मुझे उससे रिकवर करने में कि oh my god, I just stubbed my toe on the side of the table and stuff. So I think the volume of attack, I don't think we humans are ready for that from the social media. I check out, I mentally, this is यही तो सारी मैं समझाना चाह अभी, मतलब उसकी वजह ट्रिगर यही बना कि I was like के I could not even deal with the fact कि मैंने इतनी इमोशनल वनरेबिलिटी दिखाई है और इतनी इमोशनल और पता नहीं सीक्रेट सो कॉल्ड बातें मैंने कर दी हैं, तो अब उन बातों का ये बन गया है, तो मेरी इमोशंस को वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो वीडियो अभी भी वहां पे है. मुझे यही हो रहा था कि अभी कोई आएगा और वो उनको देखेगा और उसके अंदर से वही वाली कोई गंद बला निकालेगा अपनी पसंद की, और जो है ना फिर कोई कमेंट करेगा. और मतलब माशाल्लाह से ये वो हजरत है, इनमें से एक तो मतलब मैं द पर्सन मैं जानती हूँ कि वैसे मतलब जो है ना क्या नाम है, सारे टिक बॉक्सेस चेक होते हैं, उस पर लफाजी भी बहुत की होगी, उस पर बातें भी बड़ी लंबी चौड़ी की होंगी, ठीक है ना, जितने जितने मुश्किल लफ्ज हैं वो भी सारे आते होंगे बोलने, मतलब जबान तड़ तड़ चलती होगी, लेकिन जो है ना क्या नाम है वैसे अंदर से खोखला, यानी कि द मोस्ट डिसइंजीनियस पर्सन दैट यू कैन come across, that is going to stoop to any level to make a point. तो किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी how I deal with it, मगर कोई चेहरा भी क्या तुमने पढ़ा है. ओके समझ नहीं आई. सैड नहीं होना ना मरियम, हैप्पी. हम आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो सैड नहीं हो रही मैं. how do you मरियम अगर आप ज्यादा I don't have a formula unfortunately for you how to deal with it. मरियम अगर आप ज्यादा सैड हो रही हैं तो आप गायब भी हो सकती हैं, क्योंकि आप वेयर इज वॉल्डो की टी शर्ट तो चोरी कर आ जाई. बहुत लाइक अमेरिकन जोक था. कितनी देर से आप जोक सोच रहे थे शहजाद? अभी मैंने सोचा कि ओह माय गॉड, टू मच इमोशनल वल्नरेबिलिटीज. जोक डिफेंस मैकेनिज्म. जी एकता, I just want to say, like Mariam से मैं ये कहूँगी कि I think the way that like I see it, and I don't know if it comes with the generation, because like I feel like मैंने जो properly पहली दफा social media use किया होगा that was Instagram, and it's also private and then you make it public and stuff. But I do think that the way I see it is anything, like even now when I'm talking, it's with the expectation कि ये अगर शहजाद हटा भी देता है ना, I feel like
ये 50 साल बाद कहीं ना कहीं से तरीका है इसको वापस निकालने का. तो मैं I always keep that in mind. Having said that, I do think there's a lot of power. काफी दफा like मैं भी जब पहले काफी like regularly आती थी, I would say things and then like later I would go read some comments and they would be like, oh you know एकता ने तो कुछ like racist बोल दिया and stuff. और मैं बोलती थी मेरी like कभी intentionality नहीं थी. But the thing is कि like there's a lot of power in putting your opinion forward, especially when it comes to talking about yourself. और अगर कोई ये चीज बोल रहा है, and I know the specific conversation that we're having right now, I feel like I just have a problem with somebody saying कि like तुम्हारी mental health चुदी हुई थी तो इससे मैंने कभी कुछ seriously लिया ही नहीं तुम्हारे बारे में. I just think that that in itself is very shitty to say, because it's like I don't know what normative mental health you expect to take a person seriously. मतलब अच्छा सिंस मुझे इस चीज में कोई खास तकलीफ नहीं है, अगर मैं ये ओपनली बात कर दूं तो मतलब दैट पर्सन आल्सो सेड कि यू वर तो ऑलवेज ड्रंक यू नो व्हेन यू वर देयर. But that's also saying like if I was something like, happened to you you, are you the were biggest always like so-called proponent of women empowerment. You are saying shit like this, okay? Guys, yeah. So I'm sorry. yeah. I'm sorry I'm cutting everyone off, but if I could just steer this conversation into a happier ground, because this is TP 3 years, this is not TP, let's everybody sit and cry together over the past. We can do that off camera as well. Sorry, Sajeer, if we don't have a karaoke mic, which would help you to be vulnerable. Yeah. Also, no, I just want to. Sajeer ये कह रही है on her actual birthday, she took a karaoke mic. It all started when I was 7 years old. That was not my birthday. That was way before. On my birthday, I was very happy. I was dancing everywhere, and that was great. But I wanted to ask. Sajeer had a Bollywood birthday. Yes, I did have a Bollywood birthday. Sajeer, if I may put a button on that discussion before you move on, yeah, we're not saying all lot of these things to be, you know, congratulatory in any way, shape or form. But I also want people to realize, you know, when sometimes they're being complimentary to this podcast, thank you so much, and then they say shit about other people, you have to realize that, you know, being personal or being vulnerable comes with a cost. So if people want to make content which is dispersonal, which is about companies, business, economy, and they don't want to share their personal things, I think we should respect that decision, right? Because all of this comes with a huge price. And maybe if we were smarter and we Ghost of Christmas Past aate and they would have shown us the price that we would have needed to pay, the pound of flesh Shylock would have stolen from us just to say our truths, we might not have also said the thing that we've said. So other content creators who don't want to, or who, you know, are not personal, I respect that decision. So sometimes when you guys go after other people कि ये लोग इस तरह क्यों नहीं करते, मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है. So props to the work that they do. Sorry Sajeer, I cut you, so now. No. I was thinking that we're going to steer away from this conversation, but just because we're still on it, I just want to say that yes, it's not easy talking about personal shit, which is why I never do it on the podcast. But I am really glad that you guys do it, because and this is, I think, something I've said multiple times, but 2020 was not a great year. I think things were changing very rapidly. And just to see, I think what really got me and Ekta through a lot of stuff was literally you guys up on a screen and watching you guys talk, be vulnerable, share your stories, share the good things, the bad things, have your sort of like experience that friendship and experience just you guys being you, so genuinely you in varying capacities. That was hands down one of the highlights of 2020. So thank you guys for that. Thank you guys for your vulnerability. And I think इधर एक बात समझने की बहुत जरूरी है that people are, again, like I said, people are people. People will, if I must have said something in 2020 that I don't stand behind today. You know, that's the entire point of growing. That's the entire point of becoming a better person. You have conversations that change your perspective, that change your mind. That is literally the point of this entire podcast. So if any of you have managed to do that, if any of you have managed to find growth, which I'm sure you have, congratulations. You've just done the exact thing this podcast was all about. So that's it. That's all I want to say. Thanks, Ajay. And
Yeah. And अच्छा, now for the question. मैं ये एक और भी बता दूं कि मैं जो इस पॉइंट को रेस करना चाह रही थी, वो द काइंड ऑफ कमेंट्री और द क्रिटिसिज्म और द वल्नरेबिलिटी कमेंट्री जिनसे मैंने रिसीव किया है, आई डोंट नो मोस्ट ऑफ दीज पीपल, दे आर जस्ट रैंडम कमेंटिंग. So that's also one of the lessons that, you know, I was like, okay, maybe be careful next time. Mariam, once, somebody told me to never show my nose in public because it feels like things can fly up my nose. And do you see me getting a nose job? No. Even if they're right and it hurts, I'm not getting a nose job because I can't afford one. But some things you just have to let slide. Saden Wahab keh rahe, Mariam, listening to you back in the podcast was very therapeutic for me. To hell with what people say, you occupy your space. I think that's very, very important, and all of us have learned this the hard way because of maybe people who've made us feel small in our lives, or very shy of the space that we occupy. Even Sajeer on her birthday, despite having the most fun, was more concerned about cleaning up, which she shouldn't have been. Because I want to take credit for Sajeer's newfound problem where she feels the need to clean every space. I have instilled that in her because that's not a good thing, Ekta. Whatever. No, it's a good thing. मुझे दिया, मैंने Sajeer को दिया. Oh my God, I just noticed Abbas You're has allowed to be a slob on your own birthday and have other people. You don't always have to clean up after yourself. Sometimes, especially on your special days, I can clear the crumbs, or somebody will come in the morning and do it. You don't have to worry about that. It's called having anxiety, Shehzad. You should be sensitive about it. It's generational at this point. I think Sajeer could sense the anxiety I had about the crumbs, which is why she was cleaning up. But occupy your space, yeah. People who make you feel small, and when they see you occupying your space, they want to cut you down to size so that they can feel bigger than you. Or don't ever shy away or say sorry for the space that you occupy. And considering Sajeer makes TikToks about apologizing to a door frame, occupy your space, Sajeer. I love that one. I think I shared that one, and I literally did that the other day. वो अलमारी को मैंने ऐसे बोर्ड लगा तो मैंने सॉरी बोली उसको, तो फिर आई रियलाइज कि मैंने इस वो शू हैंगर था व्हाटएवर, फिर मैंने उसको सॉरी बोली एंड देन आई पोस्टेड योर वीडियो टू माय फ्रेंड. आई वाज लाइक, yeah, that's what we do. Fellow podcast host Abbas has joined us, और ग्रुप चैट में उनको मोहब्बतें मिलना शुरू हो गई हैं. So let's get Abbas को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, but let's get his take on TP. Hi Abbas, how are you? Hi Shehzad, thank you so much मौका देने के लिए. Hi Mariam, आपको भी मैं एक बार तंग कर चुका हूँ इंटरव्यू के लिए. Everybody, hello, अस्सलाम वालेकुम. Shehzad, I really wanted to just take 2 minutes. और टेक्निकली अगर हम देखें ना तो मैं आपसे प्लेटफॉर्म में हर चीज में बहुत छोटा हूँ, बट टेक्निकली हम कंपैरेटर्स हैं, राइट? लेकिन आई कैन नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी, लाइक आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर द प्लेटफॉर्म दैट यू हैव. आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर द वर्क यू डू. और हमारी बहुत कम बात हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत इंसान को आप पहचान जाते हो. आई कैन नॉट लेट पीपल नो कि आप कितने जेन्युइन हैं, आप जिस चीज जो कर रहे हो, हाउ मच डू यू बिलीव इन इट. और I sometimes just see your comments inspiration के लिए आपके podcast और सब, and कभी कभी मैं आपको बताता भी हूँ कि this went really good, thank you so much for this. I don't have words for लोगों के लिए उन्हें बताऊं कि what great work you and a lot of other people are doing. क्योंकि अगर आप देखो, आपने भी बाहर से पढ़ा, मैं बाहर पढ़ता हूँ, बाहर रहता हूँ. We are at a verge कि जहाँ हमारी सोसाइटी कोलैप्स हो गई है. We are at a verge कि डिफॉल्ट हमारे सर पे खड़ा है. We are at a verge के पॉलिटिक्स की कुछ नहीं समझ आ रही. We are at a verge के अब कुछ बचा नहीं है हमारे पास. ये जो थोड़ी सी सेन वॉइसेस है ना, जो आप हैं और आप जैसे लोग हैं, जो सारी नफरत लेके, सारी मुश्किल लेके, सारी टेक्निकलिटीज को देखते हुए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल करते हुए हम तक बातें पहुंचा रहे हैं. There is no way I can thank you and everybody here और वो तमाम लोग जो ये काम करते हैं. तो I just wanted to take 2 minutes to just let you know कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. आप बिल्कुल ये करते रहें. और मैं सिर्फ थोड़ा सा जो भी देख रहा है, अगर जो मुझे जानता है, तो मैंने शहजाद से रिक्वेस्ट की कि अगर इत्तेफाकन मेरा 50th एपिसोड है 2 हफ्ते बाद और शहजाद के 3 साल पूरे हुए हैं, तो छोटा सा माइलस्टोन मेरा है, लेकिन मैंने शहजाद को बोला कि इफ यू कैन कम अलोंग और हम इनके पॉडकास्ट को सेलिब्रेट कर सकें. 3 years is a big time and I cannot thank you enough, Shehzad. I literally cannot thank you enough. नहीं, आप रुलाएंगे सर, इतनी अच्छी बातें. आई थिंक
हजारों करोड़ों लोग जो काम कर रहे हैं, सबका क्रेडिट आपने मुझे दे दिया। मैं तो नहीं इतना बड़ा कि मैं एक्सेप्ट कर लूं उन सब सेम वॉइसेस के। आई थिंक पीपल आर डूइंग फिनोमिनल वर्क, राइट? सो व्हेन पीपल लाइक इसमत शाहजहां कम ऑन द पॉडकास्ट एंड टॉक्स अबाउट हर जर्नी, तो जस्ट लाइक मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ऐसे लोग हैं, पीपल लाइक हर, दे शुड गेट ऑल द क्रेडिट इन द वर्ल्ड। हम कुछ नहीं कर रहे यार। अगर हम थोड़ा बहुत एम्पलीफाई कर सकते हैं तो दैट्स द लीस्ट वी कैन डू। बट थैंक यू सो मच अब्बास, एंड थैंक यस, यू। आपसे लंबी कॉन्वर्सेशन करेंगे। वी आर डूइंग Sure. इसके जो वीक आ रहे हैं उसके बाद वाले में हाँ, प्लान आराम से, करते हैं आराम उसको से. सर। I would just go off because यहाँ सुबह है, I'm at work, but I just wanted to thank you. Thank you. Thank हाँ, you, and please be safe. कॉस्टको में Please काम be safe. करते हैं कोई पूछ रहा है, या किसी वेयर हाउस में काम करते हैं? नहीं, मैं काम नहीं करता, मैं सुबह सुबह ग्रोसरी लेने आया हूँ मैं हाँ, कॉस्टको में ही, लेकिन मैं चलिए ग्रोसरी लेने के आया हूँ. चलिए, Thank you आप so much, सब्जियां Siddharth. खरीदें। Take थैंक यू care. सर, Take थैंक care. यू, Thank थैंक यू, you. बाय बाय। I don't know how to cancel this. चल, मिल गया. मैं Thank you. हटा Take देता care. हूँ आपको। जी मरियम सजीर एकता। I want to know what are, because I wanted to steer this to a happier place. So, what is the best thing you guys have heard from either a listener or from a friend or from anybody that listens to the podcast about TPE or about your presence on TPE? मैं फिर साइड कर दूं इसको? नहीं, happy कर दो कर करो. दो, ताकि मैं यार, जितना awkward फील कर रही हूँ ना इस वक्त मैं जरा कम करूँ. you no, rest. like, yes, I know I said कि if we knew the cost we wouldn't do this, but at the same time why we do this is because we know how that feels, right? We know exactly how that feels. So I've been very vocal about my mental health and I'm not going to go into it. I've spoken about it at length. I have a couple of TED talks on it as well. But एक दफा आया था comment के I somebody that I was on the verge and your podcast helped me. And just, I was like, यार अगर 3 साल मेहनत करके ये करके इस दुनिया की गालियां खाकर अगर one person was on the brink or on the ledge and came back because of this podcast, ठीक है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, right? Like, not to be religious about it, but if even our religion teaches us to save one life is to save humanity, तो अगर जिंदगी में और कुछ नहीं किया और ये कर लिया तो is enough. और क्या चाहिए? Yeah, I think that's beautiful. हो गए No one. अरे एमओ हो गए. अब इसके बाद मैं तो कुछ बहुत पेटी सा बोलने वाली थी. इसके बाद एकता भी आई, मुझे किसी ने बोला था एकता इज प्रिटी. मुझे आज तक पीपी के ऊपर सिर्फ लोगों ने बोला एकता इज सो प्रिटी, एकता इज सो ब्यूटीफुल, एंड आई एम नॉट ऑफेंडेड बिकॉज लाइक बड़े होते हुए जब मैं बड़ी हो रही थी, मतलब स्मार्ट तो मैं हमेशा से थी, ये तो सबको पता है. बट ये like I was the black sheep quite literally thanks to my skin color, but the thing is like it was quite interesting when I came on TP and everyone was like, oh, you're so pretty, because I never gave importance to my physical self, and I still don't, but it's interesting to think that there are people out there who think that I am not that bad. बट थोड़ा दिमाग भी है, लाइक अब फील होता है कि लाइक शक्ल ही रह गई है, थोड़ा दिमाग भी है. तो बस यही कहना चाहूंगी मैं. So I mute anybody who makes comments on people's physical appearances in the chat, and then तुम अनुष्का और सजीर शुरू ही, and then I mute them. No, but nobody's ever said कि ये like half decent इसका दिमाग है. नहीं, a lot of people have said that. You just want to focus on the pretty comments. But तुमने, अनुष्का ने और सजीर ने फिर जो कमेंट शुरू किया, अब मैं किसी और को क्या ही मना करूं. नहीं तो बोलो, मतलब कौन मना कर रहा है. देखो, तमीज के दायरे में रह के कॉम्प्लीमेंट दो मुझे, तो मैं तो माइंड नहीं करूंगी. बट वो तमीज के दायरे में जब हर 3 मिनट में वही कॉम्प्लीमेंट तमीज के दायरे में आए ना, तो फिर अच्छी बात उस है, इंसान आनी को चाहिए. म्यूट ही कर देना चाहिए. रियल लाइफ में नहीं मिलती शहजाद, हर किसी को नहीं मिलती ऐसे. देखो जहाँ जहाँ मिलती है, कतरा कतरा इज इनफ आल्सो फॉर पीपल लाइक अस. अच्छा जी मरियम, या सजीर क्वेश्चन.
मेरा चल बेस्ट जाएगा। क्या? हाँ. What is the सजीर best thing रिपीट that कर दो. you've heard from someone from TP, that somebody has reached out to you or like a friend has said to you about your presence on TP? एक बहुत जबरदस्त कमेंट था, उसने कहा था कि अगर मरियम जैसी शक्ल और क्रीडेंशियल्स का कोई लड़का होता ना इस वक्त, तो वो दुनिया के टॉप पे जो है ना कॉन्फिडेंस के मारे पहुंचा होता. आई वाज लाइक यस, यू आर राइट. जो बात है, जो बात है, जो बात है. I love that comment, and I have thought about it. Whoever commented, I think about your comment at times, and it gives me some level of sanity. I But just want to sad add भी to तो है what ना you ये. said, Mariam. Sorry, Saj, I'm cutting you. I just want to add to what you said. Like, you just said this and I thought of it, and it's like, if I just imagine a man being the way you are, the whole perception of you will be different. Like, right now, you're perceived as like the woman who goes against culture, right? Or like has a very counter-cultural sort of. Then I will be the same process towards the feminist. But if you were a man, if you were a man, you'd have a huge dick and you would be having a great like life because देखो कितना confidence है. Yes. और Sajeer, 100%. और मजाक के अलावा मुझे ये कंफर्म पता है कि अगर मैं लड़का होती तो इस वक्त मैं पाकिस्तान में ही होती, क्योंकि मैं पाकिस्तान में, चूंकि मेरे लिए इतना कंफर्ट है और मुझे कोई नौकरी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे हर जगह इंटरव्यू भी दिए जाएंगे और नौकरियां भी दी जाएंगी, और तो मैं बड़ी खुश होती अभी पाकिस्तान में. मेरे बहुत खुश होते. मेरे अब्बू जो है वो अक्सर कहते होते हैं अगर ये दोनों इस वक्त लड़के होते ना तो मेजर होते इस वक्त ये दोनों, because he himself is a retired army officer. So imagine. just to say कि mansplaining का क्या हाल है. Somebody wrote a thread on the subject that Mariam is an expert on, without ever being anywhere close to that subject. What comment? This is one of my favorite things. I love mansplaining, dude. I just love it, man. Just tell all of the things that you know that you can tell it to. एक मुझे इससे एक मीम याद आ गई. मैंने एक मीम पढ़ी थी कि mansplaining is something like एक छोटा सा बच्चा पहली दफा वो डिज्नी डायनासोर नहीं देख रहा होता, म्यूजियम में नहीं जाता और अपनी अम्मी को दिखाता है, माँ ये देखे ये डायनासोर, इसका ये नाम है, मैंने इसका ये सीखा हुआ है, ये इतने साल पुराना था, इसको ये इसका पूरा नाम है. तो mansplaining to a woman about her vagina and about her other shit is exactly the same. बहन जो whoever you are, I didn't even read the comment. बस सो जाएं, 2 घंटे से ऊपर हो गए. मेरा तो सैटरडे है और 10 बजे हैं, तो 10 बज गए पर पॉडकास्ट भी बाकी है. अच्छा, क्या मिसोजिनिस्टिक मैंसप्लेनिंग कमेंट आया? मुझे मिल नहीं रहा, मुझे बता दे कोई. मैंने तो कोई नहीं पढ़ा. But yeah, let's move towards closing this. Rabi, you have not said something in a while, so let's just get your statement. कोई मुझसे भी पूछ ले what my best. Oh yes, of course, please. I didn't. Sajeer, you get positive comments as well. No, I don't. That's the entire thing. I don't. Okay, what positive comment did you get? Anushka and Ekta's comments don't count. I don't get that's what I'm thinking. If anybody's watching this, exactly, ये तो मुझे गालियाँ देती है. अगर कोई देख रहा है मुझे positive comments भेजो, मेरे Instagram पे जाके follow करो, मेरे TikTok पे जाके follow करो और मेरा Facebook page like. One time one of my teachers thought I was very cool because I had been on the podcast and I got 100 in that subject. I wasn't even good at it. एक दफा अभी जब मैं जर्मनी से, मैं और आमना पाकिस्तान वापस पाकिस्तान से जर्मनी वापस आ रहे थे, तो एयरपोर्ट पे there was this girl, she was so pretty, उसने मतलब मास्क पहना तो बड़ा क्वेश्चन थी. वो मुझे और आमना को देख के कहती, आर यू द गुराया सिस्टर्स? मतलब मुझे पता लग रहा था कि वो कराची से है. तो हमने कहा हाँ. तो you have been on the TP ना, है ना. was like wow. और वो हमारे साथ बैठी हुई थी throughout the flight. Rathore Yasir, I have an entire podcast on fat shaming that will come out in a week or two, so I don't think we need to. Sami Shah ने मुझे एक दफा मैसेज किया कि वो ऑस्ट्रेलिया में कहीं जा रहे थे और जो सिक्योरिटी गार्ड था was like, oh I saw you on the podcast, and Sami was like,
ब्रो तुम्हारी क्या रीच है? एंड आई वाज लाइक मुझे भी नहीं पता कौन कहाँ से ये पॉडकास्ट सुन रहा है, but what, like it just brings people together, right? Because again Sami saw Pakistani was like, ye mera show hai, comedy tickets le lo, and then that guy came to his show as well. So it's phenomenal how the world works. Yeah. Yes, I think this is great. भाई सौरभ भाई कह रहे हैं तुम्हारा पॉडकास्ट ताजमहल के सामने बैठकर देख रहा हूँ। वाह सौरभ, नैना लगे तो लगे, but I don't know why it reminded me of that Imran Khan movie. मेरे ब्रदर की तुलना जी। हाँ शहजाद, एक दिन मैं तुम्हारा पॉडकास्ट शाहरुख खान के घर के अंदर बैठ के देखूंगी। मन्नत है तुम्हारी ये। Adil, I am against boxing people on the basis of their gender, but it's been over 2 hours. I do want people who are listening still to give feedback on these live sessions. I know every time we do this, I'm like, we should do this more often, and then we end up not doing them more often. But even as it's for us, it's great because people come on and feel that connection. And with this podcast, I've always tried building a community and people to feel like it's their podcast, and हम उनके घर में बैठ के उनसे बात कर रहे हैं. But on podcasts like this where people come on, I would love to hear in the comment section what people think of these. So maybe we can do these a lot more often. But इससे पहले के 2 घंटे बाद लोग सो जाएं और adult dating site spam ना करें chat. शुरू से है ये, तो जब से पॉडकास्ट शुरू है तब से ये कमेंट आ रहा है। तो सही इन्होंने मार्केट ढूंढी है कसम सब। खैर मैं सिंगल हूँ। जी राबिया, बात तो अच्छा, मगर बात है रुसवाई की। मैं बस एक टॉपिक, आई डोंट नो, आई एम श्योर आप लोगों ने राबिया व्हाट क्लोजिंग स्टेटमेंट्स। ओह क्लोजिंग स्टेटमेंट्स, मैं तो एक स्टार्ट करने वाली थी, बट या दी थैंक यू वेरी वेरी मच। और आई लाइक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, स्पेशली मरियम ने जो भी बात की, देखें जब आप अपनी वल्नरेबिलिटी एक्सपोज करते हैं ना, आप होप आपकी यही होती है ना कि आप उससे हील करें। और जब आप लोगों को वो बात बोल रहे होते हैं पब्लिकली, तो कुछ लोग तो खुद भी नहीं समझ पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो यू ऑलमोस्ट गिव देम वर्ड्स टू बी एबल टू एक्सप्लेन देयर ओन काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी, देयर पेन, देयर इमोशनल डायनामिक दैट्स गोइंग ऑन। और उसी से बंदा फिर सीखता है भाई अपने आप को, अपनी इंसानियत को, अपनी हाउ टू हील योरसेल्फ। आप like why would you share that with anybody? खास तौर पे जिस टाइप का पॉडकास्ट है, it's not like आ जाओ और हम यानी कि we'll just like listen to whatever you have to say, but with the intent कि भाई you have to eventually heal. We're all smart people here. We all want to just be whole people. So thank you very much Mariam। और जो भी किसी ने भी किसी भी पॉडकास्ट में अपनी वल्नरेबिलिटी शो की है, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव एट लीस्ट, मुझे तो हिम्मत ही मिलती है, मुझे तो होप ही मिलती है। और मुझे एक आप इतनी वोकल है मरियम के सीरियसली, इवन एज अ वुमन, लाइक आई थिंक या आई कैन बी क्वाइट गन हो एंड स्टफ, बट मरियम सीरियसली you have I was going to say you have balls, but you have boobs, big boobs। राबिया आपने तो तमकीनत की कमी महसूस ही इन्होंने नहीं की इस कमेंट के बाद। This is my क्या उसे कहते हैं, जख्मों पे नमक। ओके sorry, I didn't mean to, but I just wanted to say I'm joking. I love all of you, and you're just like those cool people that I want to be friends with, but unfortunately we don't live in the same place and stuff. I want to hang out with people. You're like the cool gang, so yeah, I love it। आज मरियम की तारीफें हो रही हैं, तो मैं एक और भी बता दूं कि मरियम जो हैं वो इनकी she really wants to do good in the world। तो ये अफ्रीका में बच्चों को जो भूखे हैं उनको खाना भी खिलाना चाहती हैं, ये भी एक इनका ड्रीम है। What the fuck? एकता क्लोजिंग। You are cancelled after this। I will cancel you because there is video evidence of this, भाई। मेरे क्लोजिंग अच्छी बातें कह रहा हूँ। मेरे क्लोजिंग कमेंट्स बस यही है, आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। मेरी कोई वैसे तो कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, शहजाद के साथ हम लटक के आ जाते हैं इधर, बहुत अच्छा लगता है। और या I genuinely want to say मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सैज फ्रांसिस का कमेंट पढ़े चैट में।
Ooh. No, but I want to say that like TPE is also, and this sounds dramatic, but it's really not. But TPE is also the reason why I'm studying what I'm studying and pursuing what I'm pursuing, because of the conversations that I started listening to over here with Sajeer, in fact, in 2020. Or I think uske baad se, like, I sort of decided what I want to do. Get out. I sort of decided what I want to do in life. So yeah, I'm really happy to be here. And I love this, and we should continue doing this. And Shehzad, you should officially call me at some point. Do not come here. You should officially call me at some point as a guest in a couple of years when I'm a proper human being. Thank you. You want to say hi? Is that the Mitra? Is that the Mitra? Yeah, it is the Mitra. Just say hi. Hi, Oh my the God, Mitra. show. Hi, guys. Just come and say hi. 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 Get That's hello. like Mitra, we what can't see you. Come in. Hi, the Mitra. How are you? You guys want to meet a really cute baby? Come here. This yes, is please show me why. Muhammad. Oh my God, show me Muhammad. Oh, Muhammad, I miss you hi. so much. Oh my God. How are you? How cute. How are you? Guys, Muhammad is my secret Dubai baby. Oh my God, Muhammad, I miss you so much. Sajeer even looks like you. Like, look at his I face. know, he is my baby. I miss him Allah. I love Allah, you. मेरा baby. I think अब हम recording बंद करके family time शुरू कर देते हैं. हाँ, ये यहाँ So I पे think I have a हम secret साथ baby. साथ मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं भी साथ की पॉडकास्ट पे हर दफा इसलिए आ जाती हूँ क्योंकि मेरा नेक पर पे कुछ पोस्ट करने का दिल नहीं करता. तो शहजाद, थैंक यू फॉर कीपिंग मी रेलेवेंट. after inviting me on this podcast. जी, Sajeer closing statements. Yes. Closing statements में मैं बस यही बोलूँगी that this what you guys are doing is really important and it's extremely vital to the landscape of Pakistan. Thank you for doing it. Thank you for having these conversations and thank you for letting us be a part of them. I feel like कि मैं मतलब तारीफें करने के लिए आज ये पॉडकास्ट करवाई थी, जो इसका पॉइंट एक्चुअली तो नहीं था, बट थैंक यू सबने जो बोला. Yeah, तारीफ मतलब बनती है, third birthday तारीफ बनती है. हाँ, तारीफ बनती है. So ये सब जो थैंक यू बोल रहे हैं, ये सब क्रेडिट नभान करीम को देते हैं, बिकॉज उन्होंने विदाउट चार्जिंग अ पेनी मेड ऑल द इनिशियल पॉडकास्ट. उनके बगैर कुछ भी नहीं होता. तो आप सब अगर ईपी से खुश हुए, मुझे नहीं ज्यादा क्रेडिट नभान को जाता है. ऑल द स्टूडियो पॉडकास्ट दैट यू सॉ बिफोर वी शिफ्टेड टू Zoom, he just out of the goodness of his heart he gave us the space, produced them. इतने अच्छे इंसान कैसे होते हैं तो मुझे समझ में भी नहीं आता. तो थैंक यू सो मच नभान. बट मरियम, क्लोजिंग स्टेटमेंट. क्लोजिंग स्टेटमेंट मैंने यही इसको आगे करना था कि कुछ लोग होते हैं कि जिनके आप चड्डी बड्डी हर किसी के नहीं हो सकते और किसी के साथ भी आप हार्ट टू हार्ट किसी, लेकिन कुछ लोगों की ना वाइब्स बड़ी अच्छी आती हैं एंड दे आर ऑलवेज ट्रू टू देयर वर्ड्स एंड दे आर ऑनेस्ट. And this is what I think that you are, Shehzad, as a person, and that's why I am friends with you. And the point that I'm trying to make is that you're an honest person. So I mean, it reflects on the effort that you're making for this podcast as well. तो मतलब ये कोई वो cloud chasing या वो वाला नहीं है. मतलब you are actually into it, heart and soul. Yeah. So I mean, I admire this. So yeah. Thank you. I admire you. I think it's much easy for me to do what I do than it is for you to do what you do. I think as a Pakistani woman, the hate and the actual threats that you face are insane. So more credit to you, more credit to somebody like Sajeer, to Ekta, to Rabia, to everybody. Existence is resistance. इस पॉइंट से मैं लोगों को भी मैसेज देना चाहती हूँ कि कैंसिल करने से पहले 10 दफा सोच लिया करें कि अगला बंदा कितने पानी में है. So yeah, if I may just turn the spotlight away from me because I'm never comfortable in it, to all of you, existence is resistance. If you listen to this podcast, if you're part of the TPE family, obviously you think against the grain, which is why you're here, which is why you find us relatable. So the way you live your life, despite the country, despite the resistance, despite the communities at large that we have, your existence is resistance. So if everything that you said about me, about this podcast, look in the mirror and I hope you can see the person that embodies all of this, because it's as much true for all of you as it is for me. Not everybody can do a podcast, not everybody can make content, but just the mere fact that you exist, just the mere fact that you try and be true to yourself, despite the resistance, despite what people say, despite hateful, insecure people who would want to make you feel small every step of the way because that's how they've lived their lives.
and you continue living your life despite that. So yeah, so all of this that we said about each other applies to you. So be proud of who you are. And when we're talking about TP's journey, think about your journey. And anytime that you feel imperfect, think about where you were a year ago, think about where you were 2 years ago, think about where you were 3 years ago. And if a child version of you could look at you today, that mind would be blown at how far you've come. So pat yourselves on the back, find love in your life. And as comfortable and easy as it may sound to be hateful for a day or two and to feel good, making somebody feel shitty, in the long run, that will only turn back on you and make you feel like shitty. So वो जो एक थोड़ा बहुत डोपामीन हिट मिलता है किसी को कैंसिल करके, किसी को गालियां देके, या किसी ऐसे इंसान को रिपीटेडली सुन के जो चाहता है कि आप उनके कल्ट का हिस्सा हो, उस नेगेटिविटी में आप रहकर हील नहीं हो सकते. सो पॉजिटिविटी लाएं. जितना अच्छे लोगों को, अच्छे इंसानों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, आप अच्छा फील करेंगे, even if you don't get that lynch mob hit. 100%. And thank you for being a part of the community. All of you are as much part of the podcast as I am. Thank you, Mariam. Thank you, Sajeer. Thank you, Ekta. Thank you, Rabia. And thank you, everybody for listening. Bye-bye. और जो लोग लाइव का पूछ रहे हैं, I've spoken to some Indian comedians about doing a live on the night of 14th August and the morning of 15th August, so हम दोनों की independence हो जाए. अगर that doesn't work out, then we'll do it with the audience. Thank you, and please keep writing thepakistanexperience@gmail.com. जिसके जो भी ideas हैं, जिसको जो भी करना है, just write to me. इसको अपनी podcast समझें, इसको अपनी community समझें. दुआओं में याद रखिएगा. बहुत प्यार, बहुत दुआएं. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.